एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लेक्चरर का जो पेपर हुआ है 8 नवंबर 2020 को, इसके सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन की। जनरल नॉलेज का पोर्शन मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दिया था 20 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम 80 क्वेश्चंस वो देखेंगे जो इंग्लिश के रिलेटेड थे। मुझे इंग्लिश का ज़्यादा नहीं पता, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर ही बताऊँगा और वीडियो के एंड पे आखिरी जो स्लाइड होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो किस इंडियन वेबसाइट से उसने उठाए हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आपने लेक्चर की प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए बेहतर है कि आप उस वेबसाइट को फॉलो कर लें। एंड पे मैं बता दूंगा। और उस वेबसाइट में तकरीबन 600 पेजेस हैं सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, और हर पेज पे 10 क्वेश्चंस हैं। तो आपको 6000 से 7000 क्वेश्चन MCQs जो हैं वो सिर्फ उस एक वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और एज इट इज़ इवन के वर्डिंग और ऑप्शंस और MCQs एज इट इज इस पेपर में, लेक्चर का जो पेपर हुआ है उसने उसी वेबसाइट से उठाए हैं। और मुझे भी मोस्टली आंसर्स जो हैं इस पेपर के लिए वो उसी वेबसाइट से मिले, तो आप एंड पे चेक कर सकते हैं। लेट्स जस्ट बिगिन दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट लाफ एट दोज बैकर्स, किसी का मजाक उड़ाने के लिए लाफ एट sounds usually associated with letters such as F, S, V, Z, in which the air passes through a narrow constriction that causes the air to flow turbulently and thus create a noisy sound are called fricatives. Normal phonological deviations that children make when producing sounds and words are referred to as phonological processes. शू को टू कहते हैं, कुकी को तुती कहते हैं, तो इस तरह के जो वर्डिंग होते हैं उनको phonological processes कहते हैं। Antonyms of grotesque, strange, whimsical, fantastic, इसका मतलब होता है अजीबो गरीब बट अच्छे मीनिंग में। और नॉर्मल जो है इसका एंटोनिम होगा तो जो कि माइल्ड होता है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो माइल्ड होगा, यानी कि नॉर्मल, स्ट्रेंज नहीं बल्कि नॉर्मल। There was a great hue and cry about Hardy's novel Tess and Jude the Obscure because of obscenity, sexual content in them. Restoration period saw the rise of heroic tragedy. John Dryden's The Conquest of Grenada फर्स्ट नावल था इस heroic tragedy के, जो आगे फिर एक फॉलो अप किया गया। Most of the novels of R.K. Narayan are set in मलगुडी या मलगुडी, जो भी ये नाम है, ये एक फिक्शनल इंडियन सिटी है, मतलब सिर्फ नावल की हद तक ये सिटी है, अदरवाइज इंडिया में इस नाम का कोई सिटी नहीं है। और R.K. नारायण ने सिर्फ अपने नावलों के लिए शहर का नाम क्वाइन किया हुआ था, बनाया हुआ था। In the preface to the lyrical ballads, William Wordsworth propounded his theory of poetic diction. When the baby is 3 months old, she or he can produce velar sounds K and G and vowels I and U. This stage is known as cooing. How many plays did William Shakespeare write? 37. At least 37, इससे ज़्यादा भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन 37 पे सबका कंसेंसस है कि एटलीस्ट इतने तो लाजमी लिखें, ज़्यादा थोड़े हो सकते हैं, कम नहीं है इससे। Who was the main contributor to the linguistic period? Chomsky. Close shave means narrow scape. Lord Byron belongs to Romantic age. Marlowe simply prepared the way for the master who was to follow. Who is the master referred to in this remark? Shakespeare. Two words with very closely related meanings, synonyms. Aurobindo Ghose Savitri is an epic of soul. In which novel of his Lawrence dealt with the psychological phenomena known as Oedipus complex, sons and lovers? What is meant by etymology? The study of origin of words and how they have changed over time. Bacon's essays are regarded as compendium of worldly wisdom. The Old Wives' Tale is a novel by Arnold Bennett. His verse is sensuous and passionate and at its best simple. Thus, according with Milton's famous definition, about whom has this been said? ये वाल्ट विटमैन के बारे में कहा गया है। What is the most common quality in Keats and Tennyson? Pictorial element इनके जो writings है उनमें होता है। In a list of languages ranked by number of native speakers, where does English come? थर्ड नंबर पे इंग्लिश आती है आफ्टर चाइनीज एंड स्पेनिश। अगर नेटिव स्पीकर्स के अलावा देखा जाए सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, तो फिर इंग्लिश फर्स्ट आती है।
Who wrote Milton, Thou shouldst be living at this hour? William Wordsworth. Emily Blunt wrote only one novel titled as Wuthering Heights. The Fairy Queen is a poem, a narrative poem by Edmund Spenser. जॉर्ज इलियट इज द पेन नेम ऑफ मैरी एन एवंस। ये जो सामने खातून है, इन्होंने अपना पेन नेम जॉर्ज एलियट रखा हुआ था। इंटेलेक्चुअली अम्यूजिंग अटरेंस कैलकुलेटेड टू डिलाइट एंड सरप्राइज इज कॉल्ड विट। हाजिर जवाबी या तुर्की बतुर्की जवाब देने को विट कहते हैं। द साउंड मेड विद एयर पासिंग थ्रू द नोज मेकिंग द साउंड एन जे इन सिंग इज कॉल्ड नेजल साउंड। Who translated the Bengali poem Gitanjali into English? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसका बंगाली वर्जन भी लिखा है और इंग्लिश में भी खुद ही ट्रांसलेट किया है। What was the name given to the poets of Auden group? New Signatures. What was the new system of printing developed in 1400s? Block style writing. Deductive method proceeds from generalization to specification. एक जनरल रूल से स्पेसिफिक नतीजा अखज करना, इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इंडक्टिव मेथड होता है कोई एक स्पेसिफिक नतीजे को जनरल अप्लाई कर देना सब पे। होली सॉनेट्स वाज रिटन बाय डॉन। सरोजिनी नायडू's poem The Queen's Arrival is based on a Persian legend. The word novel is derived from the Italian word novella. Name of technique employed by James Joyce in his novels is stream of consciousness. In Anglo-Saxon heroic poetry, what is the fate of those who fail to observe the sacred duty of blood vengeance, everlasting shame? Who was the leading figure of Christian humanism? Erasmus. The collective name given to some of the pre-Shakespearean playwrights like Marlowe, Gide, Pille and Greene is university wits. What is the time period between 1300 and 1650 in Europe called the Renaissance? Name the poet who belongs to the Victorian age but is a modern in matters of technique. Hopkins. Linde in Ibsen's A Doll's House provides a subplot by her relations with Krogstad, and she serves a foil and model to Nora, who recognizes through her that a woman is entitled to her own judgment and thought. The Glass Menagerie is a play by Tennessee Williams. Faustus asks two magicians to aid him in summoning the devil. What are their names? Valdez and Cornelius. Which of these terms refer to the study of speech process? Phonetics. Maya is the central character in Anita Desai's novel Cry the Peacock. Choose the correct synonym of circumvent, avoid करना किसी चीज को. Bilal has a very advanced sense of what is socially appropriate. He always knows what to say in every social context. He has which kind of linguistic competence? Syntactic. Our sir teaches mathematics besides English, in addition to English. What is the real name of George Orwell? Eric Blair. Post-colonial literature addresses the new cultural identity of colonies. The English Romantic poet who was most influenced by Spenser is Keats. Choose the correct sentence. He was shocked when she told him who called her last night. Cyclone in Pakistan is poetical work by Sunita Namjoshi. Uncle Tom's Cabin is written by Harriet Beecher Stowe. Who is the creator of character named Sherlock Holmes? Arthur Conan Doyle. Casanova's Chinese Restaurant is a novel by Anthony Powell. Which of the following was a group that tried to spread Catholic teachings after Reformation? The Jesuits. Fielding's novels are called comic epic novels, satirical novels, mosiah या तंजिया novel. What is the study of sentence structure? Syntax. Morphology study of words को कहते हैं. Semantics study of meanings को कहते हैं. Phonology sound patterns and their meanings को कहते हैं. Keats died of tuberculosis, TB. Old Norse is almost the same as which modern Scandinavian language? Icelandic अब भी काफी हद तक पुरानी जुबान Old Norse से मिलती जुलती है. Grammar translation method stresses on accuracy. Speakers learn how to participate in a conversation. Conversational exchanges can be viewed as cooperative. Describe how people normally behave in conversation. They behave as cooperative.
Who were the original speakers of English? The Angles, Saxons and Jutes. Arundhati Roy has been awarded Booker Prize on her novel The God of Small Things. Who called Dryden the father of English criticism? Dr. Johnson, Samuel Johnson. Is the writer of The Spy and is regarded as the first of great American novels, James Fenimore Cooper. Are consonants for which the flow of air is stopped or restricted by lips. Bilabial consonants होते हैं जिनके लिए एयर का फ्लो जो है स्टॉप किया जाता है. To which language group does English belong? जर्मन ग्रुप के साथ इंग्लिश बिलोंग करती है. The title of Sir Philip Sidney's pastoral romance in prose is Arcadia. Only a small number of medieval books survive, large number having been destroyed in the dissolution of monasteries in 1530s. Sarojini Naidu was chiefly a lyric poet. Study of which words occur together and their frequency of co-occurrence, collocations. Edgar Allan Poe wrote reviews for a year for the magazine South Literary Messenger. The Golden Breath is a novel by Mulk Raj Anand. Mastro, Pyrie and Turkevich in 1999, they identified that a newborn can differentiate between native and foreign languages. Which of the following terms are assigned to the 13 properties identified by Hockett? Linguistic universals. Developing phonological awareness means that. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला, आप अपने तौर पर चेक कर लीजिएगा. ये वो वेबसाइट है कॉम्पिटॉइड जिसको आप जब क्रोम में लिखेंगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन आंसर वाला पेज है ओपन हो जाएगा. बिल्कुल एंड पे जाके आप इंग्लिश के रिलेटेड चेक कर सकते हैं. इंग्लिश लिटरेचर में कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, जनरल इंग्लिश पास्ट पेपर्स, idioms, phrases, ordering of sentences, synonyms, ये सारी चीज़ें. उसके बाद जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का इंग्लिश लिटरेचर का पेज खुल जाएगा जिसमें MCQs होंगे. तकरीबन 600 पेजेस के सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के MCQs हैं और हर पेज के ऊपर 10 क्वेश्चंस जो हैं 10 MCQs दिए हुए हैं. आप इनको अपने तौर पर सॉल्व करके नीचे फिर आंसर्स देख सकते हैं कि इनका आंसर क्या है. That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.